अहिंसा के अवतार, अटल अहिंसा के अवतार। क्षमा दया की पावन प्रतिमा, क्षमा दया की पावन प्रतिमा। तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। सत्य धर्म के प्रबल प्रसारक, सत्य धर्म के प्रबल प्रसारक। अटल अहिंसा के अवतार, क्षमा दया की पावन प्रतिमा। तुझे नमन हो बारंबार। कहाँ पे जाना है? खद्दर के तारों में तूने, खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार। खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार। चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार। चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार। त्याग तपस्या तन्मयता के, त्याग तपस्या तन्मयता के, शुचिता के साधक साकार। नियम नीति के नवल निकेतन, नियम नीति के नवल निकेतन। तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। राष्ट्र धर्म के नव निर्माता, राष्ट्र धर्म के नव निर्माता। हे हरिजन के हितु अपार, राजनीति के नायक नेता। तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। भ्रातृभाव के शुभ संचारक, भ्रातृभाव के शुभ संचारक। हे गुण गरिमा के आगार, कर्मवीर गीता के गायक। तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। आरत भारत की विभूति है, आरत भारत की विभूति है। भव्य भावना के भंडार, भव्य भावना के भंडार। कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा के कांत सलोने। तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। परवशता विषनाशन हारा, परवशता विषनाशन हारा। सुधा स्ववशता के दातार, सुधा स्ववशता के दातार। हे निर्बल के बल है बापू, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। हे अजात रिपुतामस त्यागी, हे अजात रिपुतामस त्यागी। हे अनुरागी अमित अपार, हे अनुरागी अमित अपार। हे मोहन हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। चला गया।
Yes, children. So now we'll see आरत भारत की विभूति है। आरत भारत, आरत भारत की विभूति है। आरत भारत मीन्स दुखी, आरत मीन्स दुखी, दुखित, दुखित होना, दैट इज सैडेंड, सैडेंड, सैडेड इंडिया, ओके, सैडेंड, सैडेंड इंडिया, ओके। सो 1 minute। सो क्या बोल रहे हैं? सैडेंड इंडिया, द इंडिया इज वेरी मच सैड बिकॉज ऑफ दी स्लेवरी, बिकॉज ऑफ दी नहीं आ रहा है। चिल्ड्रन, कैन यू सी माई स्लाइड? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, ओके। आरत भारत की विभूति है। भारत मीन्स इंडिया, विभूति, विभूति मीन्स प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है? इंडिया। इंडिया इज पब्लिक पीपल आर प्रॉपर्टी, बट व्हाट इज, how was Bharat, how was Bharat when Gandhi ji was there? When Gandhi ji was there, Bharat people were very much sad because they were treated like slaves. They were not treated like citizen people, Indian citizen people. They were treated very bad. भव्य भावना के, भव्य भावना के भंडार, भव्य भावना, that is very much valued thoughts. He had very much valued thoughts, high value thoughts. Grand, that is, grand means what? Very big, yes, very huge. So he has very much valued thoughts, feelings, okay. He had so grand feelings, that is high thoughts, high thoughts for his country. Bhandar means a group. So he has so many mixed feelings about our country, okay, so many mixed feelings about our country. And he was very sad about his India, about the property, about his India. कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा, कस्तूरा, do you know who is Kastura? Gandhiji's wife's name is Kasturba. Kasturba Gandhi, she is Gandhiji's wife. Kant, Kant means husband. Husband, okay. How was he? He was beautiful, he was smart. Salone means sundar. You know what is sundar, right? Sundar means beautiful. Kasturba Kant, Kastura ke Kant Salone. Kastura ke Kant Salone means he is a beautiful and smart husband of Kasturba Gandhi. Kasturba, okay, her name is Kasturba, but here in the poem it is given Kastura ke Kant Salone, tujhe naman ho barambar. आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरबा के, सॉरी, कस्तूरा के कांत सलोने. सलोने मीन्स लुकिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग चार्मिंग, ओके, looking charming, looking beautiful. For boys we don't say beautiful, we can say charming or handsome. तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार. Once again I'll read this. K, see children, is, are, like that. K is, we cannot give any meaning for K. Off, it is like off, to and all is there, no? So it is like off. Kasturba ke Kant, Kasturba's husband. के आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार.
कस्तूरा के कांत सलोने तुझे नमन हो बारंबार. Okay, clear children this stanza? Yes. Clear children? Now ma'am will sing this once again, this paragraph, this stanza. आरत भारत की विभूति है, आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार। Okay. Yes, children, any doubts in this in the stanza? Is it clear? No ma'am, no doubts ma'am. Okay. So now we'll move on to the next stanza. परश्वता विषनाशन हार परवशता विषनाशन हारा Paravashata Vishnashanhara. Paravashata means compulsion. So what is the compulsion of people at that time? Do you know what is the compulsion of people at that time? Vishnashanhara. Nashanhara means nash karna. The one who destroys. The one who destroys. Vish. Vish means poison. What is that? What was the compulsion of the people at that time? When Gandhiji was there, people were compelled to do work for the white people, that is foreigners, the British people. People were compelled to do work for the British people. Okay? Paravashata Vish. Vish means poison. Okay, like poison destroys us, right? If you have poison, what will it do? It destroys us. So those people were like compelling us to destroy ourselves. They were compelling us. What will happen if the Indian people are destroyed? Then the country will be in their hands. They will rule the country, right? So they wanted to compel the people, and they wanted. Shri Hasini, what are you sending in the chat box? Shri Hasini? Yes, children, is this a place to play with the emojis? If you want to play like that, you can use your mother's or father's mobile and play it separately, not in the class, okay? Paravashata Vishnashanhara, that is, the people were, the British people, the white people were forcing our Indian people to work for them, and they were completely getting destroyed. They were becoming very weak. Sudha Swavashata ke datar. Sudha Swavashata ke datar. Swavashata means self-reliance. Self-reliance. Self-reliance means what? Do you have any idea about self-reliance? Being independent. Okay? Being independent. We should be to be independent. Indian people were always they always wanted to be independent. They don't want any other country people to control them. Sudha Swavashata ke datar. Datar means the one who gives. Giver. Okay, the one who gives. Giver is called datar. Who gave us?
Who gave us this country, independent country? Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji gave us this independent country. Yes, we have to be independent here. Hey Nirbal Cable. Hey Nirbal Cable. Nirbal means weak. Weak people. Bal means what? Strength. Strong people. Balwan. Yes. Nirbal Cable. Yes. What is Nirbal Cable? Weak people were there and Gandhi ji came as their strength. बल दिया था उनको. किसको? निर्बल लोगों को, वीक पीपल को गांधी जी ने बल दिया था. He was like their strength. They were not becoming weak when he has raised his voice for the country people. Hey Bapu, you know what is Bapu, right? Gandhi ji is called as Bapu. तुझे नमन हो बारंबार. तुझे नमन हो बारंबार. परवशता विषनाशन हारा. परवशता विषनाशन हारा. सुधा स्ववशता के दातार. सुधा स्ववशता के दातार. हे निर्बल के बल. हे बापू, तुझे नमन हो बारंबार. तुझे नमन हो बारंबार. Okay, children, listen carefully. This poem, in this poem, we will only give you meanings. Exercise part we will not touch here, and this is just oral poem. Because you have to understand the whole poem, we are giving you all the English meanings. You just try to read this, okay? 1 or 2 stanzas we will ask you to read, and we will mark this marks as LSR. This will be considered as your LSR. Whenever ma'am is asking you to read the poem, that will be marked as your LSR marks. So this poem is like oral, only the meanings we will give you, English meanings, okay? Hindi to English meanings. Now, any doubts here? Any doubts, children? Again read, ma'am. Ma'am, please repeat the poem. Ma'am, Yes, children. Yes. please repeat the poem. Yes. परवशता विषनाशन हारा. परवशता विषनाशन हारा. सुधा स्ववशता के दातार. सुधा स्ववशता के दातार. हे निर्बल के बल है बापू. हे निर्बल के बल है बापू. तुझे नमन हो बारंबार. परवशता विषनाशन हारा. परवशता विषनाशन हारा. सुधा स्ववशता के दातार. हे निर्बल के बल है बापू. हे निर्बल के बल है बापू. तुझे नमन हो बारंबार. तुझे नमन हो बारंबार. Ma'am, show the page, ma'am. Which page? We see one page, no. This one? Yes, This ma'am. one? Yes, Page ma'am. number This is is 2. one. Page number 2. Are you asking it for writing the meanings? No, ma'am. One ask, ma'am. What? What doubt you have? What is this one, ma'am? Huh? We put one.
one code and put full stop down. Exclamatory What mark. is that? No, ma'am. This, okay, 1 minute. I'll show you. This one, right? You are asking this one. No, ma'am. This Second. Third line I telling, ma'am. Are you asking this one? Yes, ma'am. That is exclamatory mark. Why we put exclamatory No, mark? ma'am. 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 Ma'am, I telling Ma'am, inside. please repeat it, ma'am. Kindly. Exclamation mark. Ma'am, please repeat the poem, ma'am. Repeat this poem, ma'am. Repeat this stanza. परवशता विषनाशनहारा, परवशता विषनाशनहारा, सुधा स्ववशता के दातार, सुधा स्ववशता के दातार, हे निर्बल के बल हे बापू, हे निर्बल के बल हे बापू, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। चिल्ड्रन, यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टॉप करना है। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब ये चिन्ह लगता है, ये सिंबल आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टॉप करना है, हल्का सा रुक जाना है। हे निर्बल के बल हे बापू, हे निर्बल के बल हे बापू। ऐसे नहीं पढ़ सकते हे निर्बल के बल हे बापू, ऐसे पढ़ेंगे हे निर्बल के बल हे बापू। दैट्स व्हाई दे आर गिवन टू हियर एक्सक्लेमेटरी मार्क। यस, विस्मयादिबोधक चिन्ह इसको बोलते हैं हिंदी में, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जहां पर ये सिंबल लगा होगा वहां आपको थोड़ा सा हल्का सा स्मॉल स्टॉप देना है। हे निर्बल के बल हे बापू। यस, कोई डाउट है चिल्ड्रन इसमें? यू हैव एनी डाउट? Ma'am, should we read the entire poem for the LSR, ma'am? Yes. Yes. See, you read and practice. I will send you the audio today. I will send you the audio today. You read this poem and practice. Okay. Now we'll move to the last stanza of this poem. Yes. I'm doing. See, you can hear, you can listen the audio and you can read. Ma'am, Children, please ma'am, don't. do we have to memorize? No. No need to memorize. You can see and read. Okay? Yes. If you want to memorize, you can do. Okay, now. हे आजात रिपु तामस त्यागी, हे आजात रिपु तामस त्यागी. Ajat ripu means the one who is not having enemy. Ripu means the one, Ajat ripu. Okay? One who doesn't have enemy. Okay? Tamas, Agyan, Krodha. See, what is he sacrificing? Tyagi means sacrifice. What is he sacrificing? What is he sacrificing, children? He is sacrificing his knowledge. He is sacrificing his anger. Okay? What is he sacrificing? He is sacrificing his anger. Hey Anurag Amit Apar. Hey Anurag. Anurag means the one who loves everyone, the one who is kind with everyone. Okay? The one who is very much in love with other people. Hey means what, ma'am? Amit Apa. को समझ में नहीं. Okay? The one who loves and one who is kind with everyone. Shri
Shri of 3C, what do you want? What, ma'am? Hey means what, ma'am? First word. See, hey means we are talking about Gandhiji. In English also we say hey, no? It's same hey only here also. Okay? See, children, don't ask me the meaning for single word. There is no meaning for all those single words. It is like prepositions, like conjunctions. Okay, you cannot expect single letters meaning. Anuragi means what? I told Anuragi means he loves everyone, kind. We can say kind. Okay, Amit Apar, the same thing, the kind. He's Apar means what? Apar means what? I told you Apar means countless. Yes, countless. Countless. He has so many friends. He has so many people behind him who are who show love and kindness, countlessly. That is, there is no limit. Limitless also you can say. Limitless. Okay, there is no limit for his kindness, there is no limit for his love. Hey Mohan. Mohan means attractive. हाँ, गांधी जी का नाम is Mohandas Karamchand Gandhi, right? Hey Mohan, that is, Mohan means attractive. The name Mohan means attractive. Hey Guruvar Gandhi. Guruvar Gandhi means he is like a guru for everybody. Okay, he is like a leader for everybody. तुझे नमन हो बारंबार. हे आजात रिपु तामस त्यागी. हे अनुरागी अमित अपार. हे मोहन, हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार. तुझे नमन हो बारंबार. This in pink color in last letters. That is poet's name, Sri Rameshwar Arun. Sri Rameshwar Arun. See, this is half sh. Half sh. We'll write sh like this, no? This sh. And this one is half sh. Half sh. Sri Rameshwar Arun. हे आजात रिपु तामस त्यागी. हे अनुरागी अमित अपार. हे मोहन, हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार. तुझे नमन हो बारंबार. Here children, any doubts in this? See children, don't worry about the words. Ma'am, what is Amit? Amit means he has so many friends, countless, limitless friends with whom he is very kind, to whom he shows so much of love. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So repeatedly it is about praising Gandhiji. Okay, there is Okay, ma'am. nothing much. We are just praising Gandhiji about his behavior, about his character. You just read this and understand the meanings which I have given. Okay. Okay, ma'am. What is the meaning of ahins? What, ma? Meaning of ahins, ma'am. Ahimsa. Are you talking about the first paragraph? Ahimsa, not ahimsa. Ahimsa. Ahimsa means non-violence. Non-violence, ma'am. Non-violence. That is no fighting, no quarreling, no rudeness. That is non-violence. Okay. Now ma'am will sing from the first once again, and then I will call some names to sing it. I will read it once again, and then ma'am will sing. Okay.
सत्य धर्म के प्रबल प्रचारक, सत्य धर्म के प्रबल प्रचारक, अटल अहिंसा के अवतार, अटल अहिंसा के अवतार, क्षमा दया की पावन प्रतिमा, क्षमा दया की पावन प्रतिमा, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। सत्य धर्म के प्रबल प्रचारक, अटल अहिंसा के अवतार, क्षमा दया की पावन प्रतिमा, तुझे नमन हो बारंबार। खद्दर के तारों में तूने, खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार, खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार, चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार, चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार। त्याग तपस्या तन्मयता के, त्याग तपस्या तन्मयता के, शुचिता के साधक साकार, शुचिता के साधक साकार, नियम नीति के नवल निकेतन, नियम नीति के नवल निकेतन, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। त्याग तपस्या तन्मयता के, शुचिता के साधक साकार, नियम नीति के नवल निकेतन, तुझे नमन हो बारंबार। राष्ट्र धर्म के नवनिर्माता, राष्ट्र धर्म के नवनिर्माता, हे हरिजन के हितु अपार, राष्ट्र धर्म के नवनिर्माता, हे हरिजन के हितु अपार, राजनीति के नायक नेता, राजनीति के नायक नेता, तुझे नमन हो बारंबार, राजनीति के नायक नेता, तुझे नमन हो बारंबार। राष्ट्र धर्म के नवनिर्माता, हे हरिजन के हितु अपार, राजनीति के नायक नेता, तुझे नमन हो बारंबार। भ्रातृभाव, भ्रातृभाव के शुभ संचारक, भ्रातृभाव के शुभ संचारक, हे गुण गरिमा के आगार, हे गुण गरिमा के आगार, कर्मवीर गीता के गायक, कर्मवीर गीता के गायक, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। भ्रातृभाव के शुभ संचारक, हे गुण गरिमा के आगार, कर्मवीर गीता के गायक, कर्मवीर गीता के गायक, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। आरत भारत की विभूति है, आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार। परवशता विषनाशनहारा, परवशता विषनाशनहारा, सुधा स्ववशता के दातार, सुधा स्ववशता के दातार, हे निर्बल के बल, हे बापू, हे निर्बल के बल, हे बापू,
तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। परवशता विषनाशनहारा, परवशता विषनाशनहारा, सुधा स्ववशता के दातार, हे निर्बल के बल, हे बाबू तुझे नमन हो बारंबार। The last stanza is, हे आजात रिपु तामस त्यागी, हे आजात रिपु तामस त्यागी, हे अनुरागी अमित अपार, हे अनुरागी अमित अपार, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। Children, I will send you this recording of audio. You can practice. Okay, now ma'am will sing the song and then I will call out the names. Those who are ready. सत्य धर्म के प्रबल प्रचारक, सत्य धर्म के प्रबल प्रचारक, अटल अहिंसा के अवतार, क्षमा दया की पावन प्रतिमा, तुझे नमन हो बारंबार। क्षमा दया की पावन प्रतिमा, तुझे नमन हो बारंबार। खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार, खद्दर के तारों में तूने देखा भारत का उद्धार, चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार। चरखा तेरा चक्र सुदर्शन, तुझे नमन हो बारंबार। त्याग तपस्या तन्मयता के, सुचिता के साधक साकार, त्याग तपस्या तन्मयता के, शुचिता के साधक साकार, नियम नीति के नवल निकेतन, नियम नीति के नवल निकेतन, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। राष्ट्र धर्म के नव निर्माता, राष्ट्र धर्म के नव निर्माता, हे हरिजन के हितु अपार, राजनीति के नायक नेता, तुझे नमन हो बारंबार। राजनीति के नायक नेता, तुझे नमन हो बारंबार। भ्रातृभाव के शुभ संचारक, भ्रातृभाव के शुभ संचारक, हे गुण गरिमा के आगार, कर्मवीर गीता के गायक, कर्मवीर गीता के गायक, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। आरत भारत की विभूति है, आरत भारत की विभूति है, भव्य भावना के भंडार, कस्तूरा के कांत सलोने, कस्तूरा के कांत सलोने, तुझे नमन हो बारंबार। परवशता विषनाशनहारा, परवशता विषनाशनहारा, सुधा स्ववशता के दातार, हे निर्बल के बल हे बापू, हे निर्बल के बल हे बापू, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। हे अजात रिपु तामस त्यागी,
हे अजात रिपु तामस त्यागी, हे अनुरागी अमित अपार, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। Ma'am, can you repeat this passage? Which passage? Last, huh? Ma'am, last one. Okay. हे अजात रिपु तामस त्यागी, हे अजात रिपु तामस त्यागी, हे अनुरागी अमित अपार, हे अनुरागी अमित अपार, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, हे मोहन हे गुरुवर गांधी, तुझे नमन हो बारंबार, तुझे नमन हो बारंबार। Now it's clear, children? Yes, children. Next class, you also practice in house. Next class, we will call some children who will give the name. So you read this all poem on one stanza. Okay? Okay, children. Now time is. Good morning, ma'am. Yes, Jai Gurudev. Have a nice day. Gurudev, ma'am. Bye, Jai ma'am. Gurudev. Thank you, Jai Gurudev. Gurudev. Yeah, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Jai Gurudev, ma'am. Jai Gurudev, ma'am.